Very good morning, my dear student. So today we are going to start with your another paper AIPMT 2013. Okay, so far we people have seen 2014 paper 15, 16, 17, 18 and 19. Today we are going to start with your AIPMT paper solution 2013. Okay, so here on screen is your question number 1. Select the wrong statement. Okay, what it is, just a minute. Okay, select the wrong statement आपको पूछा गया है, right? That you need to select. So everyone read the options which are given to you. Okay, what are the options given? Option number 1, isogametes are similar in structure, function and behavior. Is it true or false? Yes, ये सही बात है. Anisogamete differ either in structure, function or behavior. Yes, this is also true. Next one, in oomycetes, female gametes is smaller and motile while male gamete is larger and non-motile. Dear student, this statement is wrong. ये जो statement है वो wrong है आपका. Oogametes, right? So basically it is your oomycetes. We are talking about your oogamous type of sexual reproduction in which जो female gametes है, female gametes are generally larger and non-motile and male gametes are smaller and motile. So option number 3 is wrong. So 91 answer number 3 is going to come. However, let's see the another option. Chlamydomonas exhibits both isogamy and anisogamy and fucus shows oogamy. It is not so, right? So 91 answer number 3 is going to come. Let's read out the question number 92. Which one of the following is not a correct statement? Okay, not a correct statement पूछा गया है. What is option number 1? Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimen. Yes, it is true. Okay, botanical gardens have collection of living plants for reference. Yes, this is also true. botanical gardens में living plants होते हैं, that is for reference. A museum has collection of photographs of plants and animals. Is it so? म्यूजियम में क्या होता है? देयर इज इन म्यूजियम देयर इज कलेक्शन ऑफ, डियर स्टूडेंट, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स. Okay, not the photograph. So option number 3 is wrong over here. Let's read statement number 4. Key is a taxonomic aid for identification of specimen. Yes, this is true, right? Key, we are having alternate option. We need to select 1 out of 2. That is called as couplet and lead. We people have understood the same. So 92, dear student, answer number 3 is going to come, जो कि गलत statement है. Let's read question number 93. Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in. This question belongs to your chapter number 3, Plant Kingdom, class 11, and the same question is also repeated in our earlier paper. What answer is going to come? Non-flagellated isogamous condition, just now we people have talked about कि they are having same structure, function and all. So what answer is going to come? It's your Spirogyra. So 93 answer number 2 is going to come. Let's look out question number 94. Besides pediphyll, cyanobacteria are also found inside vegetative part of. Okay, what options are given? Chalo, look everyone carefully. Pinus, Caicus, Equistem and Coleotropium. Okay, dear student, paddy plant, cyanobacteria are basically our blue green algae. हमको पता है who is having heterocyst, a specific cell which performs nitrogen fixation. It is an नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल. वी नो दिस थिंग, राइट? तो क्या पूछा गया है? पैडी फील्ड में तो हम साइनोबैक्टीरिया डालते ही हैं एज इट इंक्रीजेस नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल. ओके, अपार्ट फ्रॉम पैडी फील्ड ये किस में प्रेजेंट होते हैं? Pinus, Caicus, Equistem, Coleotropium. My dear student, we people have understood one thing in your gymnosperm, है ना, कि gymnosperms in certain plants, roots of this gymnosperms have association with blue green algae cyanobacteria.
एंड कौन सा एग्जाम्पल था? येस, इट्स काइकस, है ना. एंड दिस एसोसिएशन, राइट, दिस रूट्स आर कॉल्ड एज योर कोरेलॉइड रूट. वी नो दिस, राइट. सो डियर स्टूडेंट, what option it must be? Pinus, Caicus, Equistem, Silotum. It's your Caicus, है ना, क्योंकि Pinus जो ऑप्शन दिया गया है, Pinus में तो कैसा एसोसिएशन है? It's your mycorrhizal association where fungus is associated with roots of higher plant. Okay, so 94 answer number 2 Caicus is going to come. Let's read question number 95. Megasporangium is equivalent to, you should know, है ना. ये क्वेश्चन बिलोंग करता है आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. एम्ब्रियोसैक, फ्रूट, न्यूसेलस और ओव्यूल. तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल. वी नो दिस थिंग, है ना. सो 95 आंसर नंबर 4 इज गोइंग टू कम. ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to E and answer the question which follows them. Okay, in liverwoods, mosses and ferns, gametophyte are free living. बोलो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? Yes, it is true, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो तो गैमेटोफाइटिक है, एंड गैमेटोफाइटिक इंडिपेंडेंट होता है इन केस ऑफ योर liverwoods, in case of your mosses and in case of your ferns. Am I clear? Yes, so first option is true. Second option, gymnosperms and some ferns are heterosporous. ये भी सही बात है. जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हिट्रोस्पोरस है. whereas if you are talking about your ferns is equal to your pteridophytes we are talking about. तो बेटा pteridophytes जो होते हैं ना, जो pteridophytes होते हैं उसमें कुछ pteridophytes है, कुछ ferns है, जैसे कि we people have understood your Selaginella and Equistem. These are having your heterosporous, right? They are heterosporous basically. So B statement भी true है. Let's read option number C. Sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is oogamous. Yes, this is also true. Next one, the sporophyte in liverwort is more elaborate than in mosses. Yes, this is wrong, है ना. liverworts we are talking about your Marchantia. ओके तो बेटा मॉसेस दे आर द ट्रू मॉसेस, है कि नहीं, तो वहाँ पे स्पोरोफाइट इज मोर इलाबोरेट. तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर क्या लिखा है? डाइशियस. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ओके, तो कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको ढूंढने हैं. ए, बी एंड सी 3 आर करेक्ट. तो व्हाट आंसर इज गोइंग टू कम? यस, 96 आंसर नंबर 3 is going to come. Okay, now let's read the question number 97. Among bitter gourd, mustard, brinjal, pumpkin, china rose, lupine, cucumber, sunham, gram, guava, bean, chili, plum, petuna, tomato, rose, withania, potato, onion, aloe and tulip, how many plants have hypogynous flower? Most important question, है ना. We people have classified ovaries into 3 categories, that is your hypogynous, perigynous and your hypogynous, perigynous and epigynous. Yes or no? Yes, dear student, if we are talking about your hypogynous flower, तो ये क्या था हमको अच्छे से पता होना चाहिए, है कि नहीं. हाइपोगाइनस फ्लावर, चलो बोलो हाइपोगाइनस फ्लावर मानी क्या? इन विच पोजिशन ऑफ ओवरी इज, बोलो कैसी होती है वो? सुपीरियर. यस, एंड ऑल अदर पार्ट आर बिलो ओवरी, है ना. तो आप देख लो इसमें से कुछ 15 ऐसे प्लांट्स है जिसके फ्लावर्स हाइपोगाइनस है, जैसे कि वी आर हैविंग योर मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, चिली, पिट्यूना, टोमेटो, विथेनिया, पोटैटो, ओनियन, एलोव, ट्यूलिप, ल्यूपाइन, सनहैम, gram and your bin. Am I clear? Yes. Okay, so 97 answer number 3 is going to come. Let's look out question number 98. Interfascicular cambium develops from the cell of, okay, secondary growth, chapter number 6, class 11 it is. Interfascicular cambium develops from cell of, yes, ये आपको पता होना चाहिए, medullary rays, है कि नहीं. चलो
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन योर जाइलम एंड योर फ्लोएम. वी नो दिस थिंग. एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ some cells of medullary ray, right, develops interfascicular cambium. This interfascicular cambium and intrafascicular cambium forms cambial ring. Okay, so question number 98, answer number 1 is going to come. Let's look out question number 99. In China rose the flowers are, okay dear student, China rose पूछा गया है. China rose basically we say it as hibiscus shoe flower. तो flowers कैसे होते हैं? It's actinomorphic, hypogynous and twisted estivation. तो आंसर नंबर 1 ही है वो आपका, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, राइट. चलो लेट्स लुक आउट क्वेश्चन नंबर 100. lenticles are involved in, okay we people have understood lenticles where, while studying bark, है कि नहीं? yes, at the time of secondary growth there is formation of cork cambium. ultimately वो divide होगा, epidermis layer is going to break down, right, and there will be formation of minute pores. This pores on bark is basically we call it as an lenticles, and इसका main purpose होता है exchange of O2 and CO2. So this is basically gaseous exchange. What are the options given? Transpiration, gaseous exchange, food transport, photosynthesis. So what is going to come? It's your gaseous exchange. So 100. Answer number 2 is going to come. Next question. एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना. एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई what we people have understood. We people have understood, again the question belongs to anatomy chapter number 6, class 11. We have understood your secondary growth, we have understood your different types of wood, है कि नहीं, spring wood and autumn wood. yes, so basically स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड क्या है? दे फॉर्म्स एन्यूअल रिंग, हमको अच्छे से पता है. तो एज सिंपल एज दैट, बाय कैलकुलेटिंग दिस रिंग इट रिप्रेजेंट्स 1 year ग्रोथ. एन्यूअल रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है 1 year ग्रोथ. तो एज सिंपल एज दैट, नंबर ऑफ एन्यूअल रिंग रिप्रेजेंट्स एज ऑफ प्लांट. एम आई क्लियर? सो एन्यूअल रिंग क्या है? Annual ring is formed in 1 year due to secondary growth. So what options are given? Its height and girth, biomass, number of annual ring, diameter of its heartwood. So what answer is going to come? Answer number 3. Okay. Let's read your question number 102. Seed coat is not thin, membranous in. Okay, not thin पूछा गया है. Not thin मतलब वो hard होना चाहिए. It should be thick. Okay, chalo, what options are given? Maize, coconut, groundnut and gram. Okay, most important point, gram if we are talking about, तो gram basically क्या है भाई? वो legumes है. And if you are talking about your legumes, तो इनके जो seed coat है is hard and thick. क्यों? क्योंकि there is presence of sclerites. Am I clear? So 102, answer number 4 is going to come. Let's look out question number 103. Transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction is. Okay, you should know transition state जो है is an intermediate stage. सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कैसा स्टेट है? इट्स एन इंटरमीडिएट स्टेट. एंड ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है ना बेटा, वो अनस्टेबल होता है. वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है. तो लेट्स लुक आउट द ऑप्शंस विच आर गिवन. ट्रांजिएंट बट स्टेबल, परमानेंट बट अनस्टेबल, transient and unstable. Yes, this answer is going to come. It is transient. Okay. And unstable, of course it is unstable. So 103, answer number 3 is going to come. Let's look out question number 104. A phosphoglyceride is always made up of. Okay, phosphoglyceride की बात करो, है ना. phosphoglyceride we have understood the structure in your biomolecule. This question belongs to your biomolecule. Phosphoglyceride, triglyceride structure we people have understood, right? Trihydroxy alcohol, that is glycerol, combines with your 3 fatty acid,
which results in formation of your triglyceride. We people have understood, yes or no? Yes. Okay, phosphoglyceride. तो यहाँ पे वही चीज़ होगी. Let's read the options which are given. Only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which phosphate group is also attached. No. Only an unsaturated fatty acid esterified to glycerol molecule to which phosphate group is also attached. Dear student, जो fatty acid होता है ना phosphoglyceride में, it can be saturated or it can be unsaturated. मतलब double triple bond हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते. Let's read the option number 3. A saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to form a phosphate group is also attached. Okay. Answer number 3 हो सकता है. Let's read on option number 4. A saturated or unsaturated fatty acid esterified to phosphate group. अब ये गलत है. जो एस्टर बॉन्ड बनेगा वो तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ बनेगा ना. So 104, answer number 3 is going to come. Let's read question number 105. Pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are. अभी मैंने आपको बोला क्या है, नॉस्टॉक, एनाबेना, है ना. Okay, they are having heterocyst, we know it, and nitrogen fixing cell. पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन को हम क्या बोले, क्रोमेटोफोर्स. यस, है ना. सो व्हाट ऑप्शंस आर गिवन, हेटेरोसिस्ट, बेसल बॉडीज, न्यूमेटोफोर्स एंड क्रोमेटोफोर्स. सो व्हाट आंसर इज गोइंग टू कम, 105, आंसर नंबर 4. ओके. अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, चलो बोलो कहाँ पे लिपिड सिंथेसाइज होते हैं. इट इज योर SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So what answer is going to come, answer number 2, है ना. Let's read question number 107. The complex formed by pair of synapsed homologous complex is called. अब ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या बोले हम, what it is bivalent, है ना. सेल साइकिल का ये क्वेश्चन है. So complex formed by pair of synapsed homologous chromosome is called equatorial plate, kinetochore, bivalent, axonema. What answer is going to come, bivalent. Okay, so 107, answer number 3. Chalo. The 3 boxes in this diagram represents 3 major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrows represent net reactant or product. Okay. देखो ये एक पाथवे दिया गया है, पाथवे ए जो है ग्लाइकोलिसिस, पाथवे बी जो है क्रेब्स साइकिल एंड पाथवे सी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके. एरोज नंबर 4, 8 एंड 12 कैन ऑल बी, ये क्या हो सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड. NADH तो क्रेब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज नहीं होता है. ATP, ओके. एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस वी गॉट ATP, तो 4 ATP हो सकता है. एट द एंड ऑफ क्रेब साइकिल वी गॉट GTP विच इज़ इक्विवेलेंट टू ATP, वो भी ATP हो सकता है. नंबर 12, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या जनरेट होता है, हमको अच्छे से पता है, इट्स ATP, है ना. तो 4, 8 एंड 12 कैन बी what, can be ATP. Am I clear? Yes. So I hope you got this really very well. चलो, जो एंटर करता है ना पाथवे में, मतलब 1 पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए. 5th पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी योर एसिटाइल कोए, है ना, रिएक्ट विथ योर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऐसा कुछ होना चाहिए. यस और नो? यस. ओके. सो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. एंड और जो बताए गए हैं, say for example 6, 7, 8, 9 is there, 10 is there, it could be NADH or FADH, क्योंकि ये तो है जो प्रोड्यूस होते हैं which undergo Krebs cycle to generate your ATPs. Okay, so 108, answer number 2, ATP must be. Okay, let's read question number 109. The most abundant intracellular cation is, okay, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. most abundant intracellular cation पूछा गया है, तो it's potassium, है ना. what answer is going to come, potassium. intracellular पूछे तो potassium and extracellular पूछे तो sodium. am I clear? I hope the same you have understood in your nervous system. Correct? Let's read
Question number 110. During seed germination, it stored food is mobilized by. Okay, during seed germination, its stored food is mobilized by, dear student, it is gibberellin. It is gibberellin जो सीड की डॉर्मेंसी क्या करता है, ब्रेक करता है बाय एक्टिवेटिंग स्टोर्ड फूड. Am I clear? तभी seed germinates to form root system and shoot system. Okay, so what answer is going to come? 110. Answer number 4, gibberellin is going to come. Let's read question number 111. Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? Okay, requirement of special membrane protein चाहिए. Highly selective, yes, highly selective. Transport saturation occurs. Uphill transport, no, my dear student. It does not pertain to facilitated transport. Uphill transport होता है in active transport, right? From its lower concentration to higher concentration. ऐसा ही ना? Yes. But facilitated transport में movement कहाँ से कहाँ होता है? From high concentration to low concentration. So it's not an uphill transport. So 111. Answer number 4 is going to come. Let's read question number 112. The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant is. What options are given? NO2 minus, ammonia, NO3 minus and glutamate. Okay, leguminous plant बोला है तो उसके रूट्स में कौन रहता है? Bacteria called as rhizobium. Rhizobium is having enzyme that is your nitrogenase. Yes or no? Yes, this nitrogenase converts, matlab breaks 3 bonds which is present in N2, that is nitrogen, to form 2 molecules of ammonia. हाँ के ना? Yes. So 112 answer number 2 ammonia is going to come. Let's read question number 113. Which of the metabolite is common to respiration mediated breakdown of fatty acid, okay, fats, carbohydrates and protein? Okay, let's read the options which are given. Glucose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate, pyruvic acid and acetyl CoA. चलो माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोटीन्स, है ना, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. वी नो दिस थिंग. चलो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी किस में कन्वर्ट होता है? वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फैट्स, फैट्स गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. Glycerol gets converted into PGAL or DHAP, which further gets converted into pyruvic acid. We know this thing, है ना. So whether we are talking about protein, glucose or fat, है ना, they are having a common intermediate and that is pyruvic acid. So 111 answer number 3, pyruvic acid is going to come. Dear student, the same thing is given in your amphibolic pathway. In your amphibolic pathway class 11, right, chapter number 14, respiration. Let's look out question number 114. Which one of the following statement is correct? कौन सा correct है ये पूछा है. Hard outer layer of pollen is called intine. ना भाई ना, उसको तो हम exine बोले. Sporogenous tissue is haploid. No, वो तो diploid है. Endothecium produces the microspore. ये भी गलत है. एंडोथीशियम का तो काम क्या होता है? यस, डेहिसेंस. ओके. टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन. दिस इज ट्रू. यस, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12, है ना. टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल विच provides nourishment to developing pollen. So 114 answer number 4 is going to come, as we need to find out the correct option. Let's read question number 115. Product of sexual reproduction generally generates, चलो देखो, longer viability of seed, prolonged dormancy, new genetic combination leading to variation, large biomass. कौन सा reproduction पूछा है? Sexual reproduction. 2 parents are involved, मतलब genetic makeup यहाँ पे mix होने वाला है.
So we get genetic combination and this leads to variation. So what answer is going to come? 115. Answer number 3. New genetic combination leading to variation is going to come. Okay. So dear student, here are your first set of MCQ. I hope it is very clear to you people. See you in next lecture with next set. Bye.